अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमने डिफी हेलमन क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को स्टडी किया। वी एक्चुअली आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने ये चीज़ नोटिस की कि आपको प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए साइफर चाहिए होता है। उस साइफर में आप की इनपुट करते हैं ताकि साइफर ऑलवेज एक ही तरह की इंक्रिप्शन ना करता रहे, वो इस प्लेन टेक्स्ट को तरह तरह की इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर चेंज करे। सो यू गिव की, you enter plain text, the cipher algorithm gives you encrypted output. अब यहाँ पर सिमेट्रिक साइफर्स के अंदर जो डी साइफर है दूसरी साइड पे, उसको भी की चाहिए जो कि सेम होनी चाहिए in order to produce the same plain text. So because the keys on both sides should be equal, that is why this is known as सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और इस सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में इस की का जो तबादला है बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। either A will generate this key and B should know about it, or B can generate this key and A should know about it. In either case, इस की का एक्सचेंज होना जरूरी है। So key exchange is something very important. In order to exchange key between two parties, one option is आप इसको physically manually change करें, and afterwards whenever you decide to change your key, you can encrypt your one time physically exchanged key. With that key you can encrypt the next key and so on. तो फिर तो सिस्टम चल पड़ेगा, but initially you have to exchange the key physically or using any third party, but that third party will also physically exchange that key. In order to avoid that catch, हमने Diffie-Hellman algorithm देखा, and Diffie-Hellman algorithm using your same untrusted network is capable of creating such an environment using which you can exchange key or equalize key on both sides. So once the key is equalized on both sides, later on Diffie-Hellman is silent. This algorithm is not used, and your symmetric cryptography engine keeps on moving forward. तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की जो रूल है वो की का इक्वल होना है, और उस की का तबादला जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड दैट चैलेंज वी हैव सीन वाज सॉल्व्ड by the Diffie-Hellman mathematical equation. Let's move on. और अब हम बात करते हैं कि how does these ciphers and deciphers work in reality. हमने साइफर के बारे में ये चीज स्टडी कर ली थी कि साइफर आर ऑफ two types. They work on blocks or they work on the stream. और उसके बाद फिर हमारे पास ये जो साइफर हैं, इसके अंदर जो की है, the key which they use, it depends upon the size of the key and the complexity of this algorithm combined together makes eventually an encryption model strengthened or secure. So इसकी complexity और इस की का साइज, ये दोनों मिलकर एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को कामयाब करते हैं। हमने इस चीज को सीजर साइफर के ऊपर ट्राई किया था,
और उसके अंदर हमने देखा था कि दैट वाज बेस्ड अपॉन सब्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर हम किसी एक करैक्टर को रिप्लेस कर देते हैं किसी और करैक्टर के साथ, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। हाँ, कहीं ना कहीं साइफर्स के अंदर ट्रांसपोजिशनिंग भी यूज हो सकती है। व्हाट इज ट्रांसपोजिशनिंग? अगर आपके पास ए, बी और सी हैं तो हम इनकी सिर्फ लोकेशंस चेंज कर दें, सो दिस इज नोन एज ट्रांसपोजिशनिंग। या इन अदर वर्ड्स, मेरे पास अगर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आई, जे, के है, तो पहले मैं इसका मैट्रिक्स बना लूं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आई, जे, के। Let me do it again. और इस मैट्रिक्स में हमें पता है कि ये हमारे पास रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम्स हैं, तो हम रोज को कॉलम्स के साथ रिप्लेस कर दें। फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एक कॉलम है, तो इसको हम ए, बी, सी हमारे पास ये एक रो है, तो इसको हम कॉलम में शिफ्ट कर दें। वी राइट ए, बी, सी लाइक दिस, देन डी, ई, एफ लाइक दिस, देन आई, जे, के लाइक दिस, और इसके बाद फिर हम इस ऑर्डर में इनको रीड कर लें। सो इट विल बिकम ए, डी, आई, बी, ई, जे, सी, एफ, के। तो ये हमने एक टेक्स्ट को विच इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आई, जे, के, उसको ट्रांसपोजिशन किया यूजिंग मैट्रिक्स मैथ। So we can transpose, we can substitute, or third thing is we can run any operation. Operation can be XOR, it can be NAND, it can be NOR, etc. Depends कौन सा आपको सूट करता है. You can perform operations. So ये मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं एनक्रिप्शन में करने की, या इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशनल साइफर भी हो सकता है, दैट वी नीड टू नाउ सी कि ये एक्चुअली रियली अगर हम किसी साइफर को स्टडी करें तो कैसे हो रहा होता है।